हमारी आने वाली वेब सीरीज़ और हमारी पहली वेब सीरीज़ एक्चुअली जो हमने सबने साथ में बनाई है बोस डेड और अलाइव 20 नवंबर को आ रही है और बालाजी ऐप पर। तो ट्रेलर हम लोगों का कल ही बाहर आया है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम सबको ट्रेलर के लिए। और मतलब सब लोग कह रहे हैं कि ये फीचर फिल्म जैसा ही है और एक्चुअली हमने उसी शिद्दत से बनाया है जैसे आप फीचर फिल्म बनाते हैं, एग्जैक्टली सेम वे में हमने इस सीरीज़ को बनाया है, बल्कि शायद उससे बड़ा ही लग रहा है जिस तरह से अभी फाइनल जो निकल के आया है प्रोडक्ट। तो हम सब लोग बहुत प्राउड हैं, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। वी ऑल हैव वर्कड रियली हार्ड टू मेक इट व्हाट इट इज। जब आपको इस स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया था तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? I was very thrilled. I was very happy and I felt very fortunate that somebody thought of me to play Netaji's life on screen, because it's very rare to get to play a character like him on screen. So I was very excited, and of course it was a challenge for me. I didn't really look like him. It was not a conventional casting, but I took it as a challenge. I worked towards it. There was a lot of effort that I had to put in, but I think it was all just worth it. Okay, so basically we came to जब आपको कैरेक्टर के बारे में बताया था, आपने बहुत डीप रिसर्च की थी, उनके लुक, चलने का स्टाइल, तो उसके बारे में कुछ बताया आपने, क्या क्या सर्च किया था? हमारी स्क्रिप्ट ऑलरेडी काफ़ी वेल रिसर्च थी, उसके अलावा पर्सन मेरी काफ़ी रिसर्च रही। ऑफ कोर्स आई हैड टू रीड लॉट ऑफ बुक्स ऑन हिज लाइफ। देयर वाज हिज ऑटोबायोग्राफी which I read, and then I spent some time at his place in Calcutta, in Kolkata, called Netaji Bhavan. And then there are a lot of videos available on YouTube. There are a lot of documentaries available on YouTube. So all that, I think I had to read a lot and watch a lot of videos to understand how he was as a person. Okay, Hansal, तो हमेशा आप डायरेक्ट करते थे, ये सीरीज में आप प्रोड्यूसर क्यों बने? पता नहीं, ये गलत फहमी है। मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, क्रिएटिव प्रोड्यूसर हूँ। प्रोड्यूसर इसकी बिग सिनर्जी है और उनके साथ ऑल्ट बालाजी जो प्रेजेंटर है, और मैंने डायरेक्ट नहीं किया है इसमें। तो मैं इसमें डायरेक्टर पुलकित है जो मतलब युवा पीढ़ी के प्रॉमिसिंग डायरेक्टर है। हंसी क्यों आ रही है? ये दरबारी लाल को हंसी आ रही है। नवीन तो फनी कैरेक्टर्स ही करता है तो उसको बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो इसमें तो बहुत इंटेंस कैरेक्टर। बताओ अपने कैरेक्टर के बारे में बताओ थोड़ा। अरे तो मुझसे तो दो आप अपने नवीन अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए। आप ऐसी सेट पे भी मेरी बुली करते थे और मैं बहुत फंबल कर रहा हूँ। अभी भी मेरे को बुली किया। सेट पे भी फंबल करता था, उसमें क्या नया है? और वही वाली टीक रख भी ली है। Say now about your character. अच्छा, मैं दरबारी लाल का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। वो उस एरा में इंडियन सोल्जर, इंडियन पुलिस ऑफिसर है जो ब्रिटिश राज को बहुत लॉयल है, बट एट द सेम टाइम वो बोस का बहुत बड़ा एडमायरर है। और उसको काइंड ऑफ ये काम सौंपा गया है कि बोस को आप पूरे पोस्ट पे नजर रखिए, हर काम जो बोस कर रहा है वो हमें रिपोर्ट करिए। तो काइंड ऑफ ब्रिटिश राज और बोस के बीच का एक आदमी है, वो है दरबारी लाल, जो उस एरा के जितने भी इंडियन सोल्जर्स एंड ब्रिटिश आर्मी है उनको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक्चुअली बोस ने उन्हीं को उकसा के रेवोल्यूशन लाए थे, वो जब उन्होंने आर्मी नैरेटर एक्चुअली। हाँ, and he's also the narrator of the show. You're watching the show through his eyes. He's the सूत्रधार of the show. जितना बोस को अच्छे से वो जानते हैं, कहानी के किरदारों में और कोई नहीं जानता, क्योंकि उनकी बोस के साथ पहली बार मुलाकात कुछ 20 साल की उम्र में हुई है और फिर वो अगले 20 साल उनको अलग अलग स्टेजेस पे लाइफ में मिलते रहते हैं। About your... So my character is a Bengali girl who belongs to the elite class of Bengal back then, and she is very rebellious, and I think that's how she connects with Subhash Chandra Bose, because he's also rebellious, and she connects with his ideologies. And also I guess through this series we are trying to show an era where women played a very important part in the struggle for the freedom. Okay, so we had worked with Kapil recently, and also we had worked with Kareena and many actors. So how was the experience working with Rajkummar? Yeah, so my work in Kapil's film Firangi, was awesome and of one kind that I was very happy to do. And the work in Bose, Dead or Alive, was also awesome in a very different way. This was very intense, very serious, and a measured and restrained performance was called for. Something that I'm not used to doing
actually have been in this industry in Mumbai now for 10 years, and People don't make you do that. They don't. yeah, when I try and do something little restrained or whatever, the director and the cameraman will just look at each other. Arey, maza nahi aaya. Fir se karo na. Loud. So I had to relearn how to act this way, actually, and thanks to Hansal sir and Pulkit, I had just amazing guidance, and just working opposite Rajkummar Rao as well, I was able to reclaim that kind of style, which I love. I love doing the other stuff too, and I love that I had this opportunity, which was very unique, to be Stanley. I'll tell you about Stanley. He represents kind of the British, the ruling powers at that time. He works, in the police department in Calcutta, and he is on the trail of Bose. From the time he meets him, early on in his career, and then throughout his life after that, he is obsessed with Bose because it's his job, and there's something a little personal as well. This relationship between the two men is adversarial, but there's a tremendous amount of admiration, at least on my side. Whenever I was doing scenes with Rajkummar, I just felt like this guy doesn't care what we do as the British. It's just like, you guys do your thing. That's fine. I'm gonna do my thing. We'll see what happens in the end. That performance from him was so inspiring, and it was so unexpected, by me, that I found I was able to, really work off of that, and it was magical for me.